character of a nation is often measured by how much each person cares for a fellow citizen. If you see someone in distress, reaching out for help, do you step out of your comfort zone or would you do nothing? That's the question we try and answer in this series. What's your choice? How much do we, the people of India, really care? Hello and welcome. Today we look at one of the biggest and most cruel problems in India, child labor. It's almost unbelievable that there are nearly 5 million children under 14 years old in India who, as they say, are earning instead of learning. And nearly half of these, that's a huge 2.5 million, are working night and day as domestic help or in restaurants and dhabas. It's a heart-rending but common sight to see middle-class couples eating at a restaurant while their domestic help, often a young person, sits quietly at another table or in a corner. There are lots of laws and acts of parliament that makes all this illegal. But child labor is still widespread in India. The question we ask in this program is, if you see a child who's being mistreated as a domestic help or working in a dhaba, would you ignore it and say the government should deal with this sort of stuff? Or would you do something yourself? What's your choice? Do the people of India care about exploitation of children, or do we look the other way? To try and get answers to these questions, we carried out real-life experiments. And we start with the capital, Delhi. We chose Dilli Haat, a popular spot in New Delhi, and our 5 actors are the mother, the father, their daughter, granddaughter, and the child domestic help. Hello. Hi. Hello. Hello. Hey. We were How are waiting you? so long. You got शॉपिंग चलो दिखाओ दादू को क्या लेके आए भैया So what's that in your hand? What did you shop? Oh, bangle. Oh, that's Very very pretty. That's lovely. Aren't they small for you? nice. They'll fit. Oh, it's looking so pretty. Anna? Had a good day in school? Good day? Sweetie pie. Good. Huh? Who's this? कृतिका की न्यू Why have you brought her here? Why? She's brought the servant. क्या करते हो बेटा उसको? Why did you have to get her? This is a family outing. हमारे ज़माने में we didn't bring the servants with us also, no? Let her sit somewhere. वहाँ बैठो. The family at the next table are clearly disturbed by what they are hearing. He's right. ठीक है डैड रिलैक्स No, you say ठीक है, but you brought her, no? You've spoiled बेटा my क्या लोगे appetite. आप? और क्या लोगे? Finally, they can't take any more and shift to another table some distance away. उसे भी कुछ खिला दो मेरी फ्रेंड है अरे वो तेरे friend कैसे हो सकते हैं? What ये is क्या this? सिखा रहे हो? What is this you're teaching? This is a friend. You get friends from your school, from your society. Huh? Those are friends. चलो हम खेलने चलते हैं मक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलते हैं ओके चलो अब ऐसे हाथ रखाता है ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वैसी लंबे पूरे सौ में निकला धागा चोर निकल के भागा चुपकी बीवी कैसी थी जूड़ा करके बैठी थी चाय गरम कॉफी गरम पीने वाला बेश Kriti, come here. Come here. ऐसे से खेलते ओके Come here, Kriti. Come. Go and sit down. इधर आओ, बैठो.
आगे से you don't have to play with her, okay? She's paid to do this job. Nonsense, really. Mom. What? Galti tumhari, are you bringing like this? But let's not confuse the matter. She's a child. She's like my child. She's not your child. अब सर्वेंट को क्या यहाँ बिठा लोगे आप? Same table. हाँ? You do that at home also. This is my grandchild. It's against My law. grandchild. It's against I do not want my grandchild. First अपने आप को देखिए आप You can't be employed. Seriously, you are not an educated class. I'm sorry, sir. You are like my parents, but you are just disgusting. The way you are talking to a child, this is just disgusting. And I'm sorry, She is doing a job. In a public place, you cannot treat a kid like that. She is doing a job. She is doing the job. You have kept on her a job. Not she is willingly doing that thing. Who will feed she's her being if she paid goes for home it, to na? the village? How do you pay Where's my her file? this Where's the child file? She's being paid for. Below 40. She's doing a job. She's a job. Where will She go? wanted a job. I seriously. Where will she go? God bless you. Please You- don't. who will feed don't- this child if she might goes be to the their village? Parents, might be your parents, but it's not necessary कि parents She is not हमेशा our right child. हो. She's the जो भी है daughter-in-law. ना, Who जो will भी है feed ना. this child if I'm you send sorry, to the I'm village? Sorry, sir. I just don't feel like talking to you. I'm so sorry. You will Please, ma'am. feed, who will feed this child? Dad. We are giving her a job. Sir, She is I'm- getting I'm so food sorry. to I eat. just She is don't- safe in the I just don't house. agree with your thoughts. That is your thoughts, which is my thought is my thought. Please, you cannot force your thoughts on me. I'm not forcing my thoughts on you. So please, I'm But not what talking is to your you. thought? I'm not talking What to are you. your I'm not thoughts? talking But to we you. haven't You tell us what are your thoughts. Ma'am, No, but ma'am, we please, haven't I'm forced asking her. you. The law of the land. Ma'am, But you she can't said hire anybody ma'am. less than 14. Ma'am, But we haven't please. forced her. God na. bless you. Her parents came saying they really need. Don't I mean, do I'm that. glad that at least you feel in the right way. Because really, She's a child who's working. She is working. She's working. She's That's a not child the who's right. working. we are all Minute, working. sir. We are all एक working. मिनट हाँ? She's getting food. एक She's मिनट, working. I agree with you. आप उसको खाना दे रहे हैं, बहुत एहसान कर रहे हैं उस पे सर. I agree. Who will मगर feed ना- this child? नहीं मगर भगवान. I will take the child. I'm- Feed her. I'm She's sorry, asking. ma'am. Her I'm daughter is sorry. wanting to play with the child. What- And what How is can wrong she? with that? They are What two is wrong different with class. that? How can they? Isn't she a baby? How can they? They're different What do you class. mean a Working, servant? yeah. Are you not working for any service? Are you a very big entrepreneur or what? We all work You for money. work ना, you We work all for work money. We all work. आपको कोई बोले कि आप नौकर हैं, आप नौकर हैं, आप साथ में मत Who बैठ. will feed No, this child sir. otherwise? confused You will because she's a feed. child. So you're getting all confused. No. This is not a matter of child. This is not a matter of child. This is the matter of servant and human. And you are doing what you are doing is against She is all. human. She is safe. it's because She is she's safe in the child. house and You're just with getting us. She is getting food to eat. getting आप totally किसी लोग confused. पढ़े लिखे होने की लायक नहीं. You're all getting very confused. You are getting a little confused, I think. Anybody below the age of 14 is illegal. Why? According to the law of the Why? land. Because there is a law But in why? the country. Who will feed the child if But she's they in the are That's village? not your responsibility. See, the point is that We felt it's now time to reveal our hidden cameras. that was not her. Ma'am, there's a TV show going on. Ma'am, we were sitting just next to them. We got up after listening their thoughts. It was just a disgusting thought. I'm sorry, ma'am. I'm just not listening to you, and I'm just not talking to you, please. Ma'am, there are Sorry, actors. ma'am. I'm so sorry, but that was a part of the act, and thank you for Ma'am, there are responding. actors. The whole purpose is to help people understand that this is wrong. Sorry. I'm so sorry. It was an act. I am sorry, but I was just not able to take this anymore. My husband said, I'll fight with you, but this is just disgusting. I'm so proud of you. We are all so proud of you. Thank you, ma'am. We are all so proud of you that you responded. We Ma'am, want people we like want you. voices like you, Yeah. because we go on about government not doing enough, Yeah. Let police me not give you a doing hug. enough. Thank you for responding, and we want women like and people and human beings like that, right? Thank you, and say they were also Yes, the same I know. category. If you are doing wrong and if you are saying wrong, it's the same thing. At least for me, अगर आप गलत कर रहे हैं और आप गलत देख रहे हैं और उसको सह रहे हैं तो दोनों चीजें एक बराबर हैं. When you know that you're not alone in raising a voice, we all feel equally outraged at the prospect of a civilized man sitting in public and doing this. So it is also when, maybe if I was all alone, I may not have been able to do. Even when you want to say something, so you're waiting and waiting and waiting, and that at one moment when that person's, you just think you're about to get up, somebody else also gets up, and the whole thing becomes,
and you get up, the momentum starts. builds up. Otherwise, sometimes you're just watching and getting angry and not saying. So for those of you who think, particularly the tabloid media, that India is totally uncaring and apathetic, well, it's time to think again. And I'm sure you'll agree that those who intervene there are our heroes, and each one of us should learn from them. That's the only way to put an end to this major cruelty in our society. Don't wait for the government. If you don't do something yourself, it'll never end. And it is a major national problem. In our All India opinion poll, we asked how common is child labor, and an overwhelming 70% said it's common or very common. And what's heartening is that younger people feel this more strongly. 75% of young, that's 18 to 24-year-olds, versus a much lower 62% of middle-aged, that's 25 to 40-year-olds, say it is common or very common to see child labor in this country. Our first experiment was, as you saw, in a big city, Delhi. But skeptical observers point out, well, that may be the reaction in a big city, but may not be the same in smaller town India. So, for our next real-life experiment, we travel to Punjab. आओ जी आओ कड़ी चावल 10 रुपए कड़ी चावल 10 रुपए 10 रुपए We set up our hidden cameras at the Sunday Bazaar in Patiala, and they are focused on this Rediwala, who is our actor. And his two child workers are also our little actors. The children and their parents have been explained that this is all an act to see if the ordinary people of Patiala react. आओ जी आओ आओ बाबा जी 10 रुपए जी 10 रुपए जी बस 10 रुपए प्लेट हैं गरम जी गरम मैं गरम है जरा ना बता के आ जाओ बाजी बैठो आराम से बैठो पूरे ला लो कोई नहीं स्कूटर ला लो कोई चक्कर वाली गल हेलो सर ओनु देओ की कड़ी हां कड़ी चावल बाजी आ जाओ सुनी आ जाओ कड़ी चावल ले लो 10 रुपए प्लेट आनंद लेके खाओ कड़ी चा ਇੱਧਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਿਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਰ ਚੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਇੱਧਰ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਹੈ पानी खत्म है ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ पानी खत्म हो गया जी ਸਾਲੇ ਲੰਡੂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਫੜ ਰੋ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਇਧਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਰੇ ਖੜਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਬੋਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ The father tries to tell our Rediwala to stop, but it doesn't really seem to have any impact. आओ जी आओ 10 रुपए प्लेट आओ जी आओ आओ जी हाँ जी कड़ी चावल है जी आ लो जी तो खा के दसो जी फिर मैं कड़ी चावल कड़ी लो चक्को चक्को लगता जी साला ध्यान क्यों नहीं देंदे तुसी ध्यान क्यों नहीं देंदे बच्चा और बच्चा बुच्चा नहीं हैगा जी रहम दोस्तार जी वो हटते नहीं जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ये बहुत कड़ी चावल 10 रुपए प्लेट 10 रुपए आओ जी आओ 10 रुपए प्लेट 10 रुपए कड़ी चावल 10 रुपए प्लेट 10 रुपए चक ले यार कड़ी चावल ਆ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਗੰਦ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ But the moment the woman leaves, the Rediwala is back to mistreating the children again. ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ क्यों मार रहे हैं जवाक का बच्चा है ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ और फिर जवाक है देख लो कभी बाल पड़ता तू कभी कुछ करता होते ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ प्यार नाल नहीं समझा सकता ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ काहदे पैसे देने पहले ये दस तू किन्ने के पैसे देना इसनू तू ਇਹਨੇ कभी ऐ पटदा कभी ऐ पटदा कर मारदी है तेनू ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ तू मैंने ऐ दस मैं तो बड़ा कि छोटा ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ मैं तेरी इज्जत कर रहे हैं तू ਇਹਦੇ जवाक ਦੇ बाल पट्टी देना ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ यार ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ मेरी गल छाड़ो तू सवेर दा लग्या तू कहदा भी जा अपने घर नू ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ मारदा क्यों तू उसनू
ਬਾਲ ਪੱਟਣਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਪੱਟਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਜਾ। ਜਾਏ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਕੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ? ਨੌਕਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਜੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਤੇਰੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇਹ? ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਬੜਾ ਫੇਰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਾ ਓਏ। ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? टूटी मैंने उतर मिलेगी जी हां ਛੱਡ उतर जी मिली थी टूटी। इसको गले पकड़ ले रहे हो, ऐसे कैसी बात होती है यार? भाई मेरी बात हो रही है ना। बेटा तो आपको बेटा कोई ऐसे पकड़ अच्छा लगता है आपको? आपका बेटा कोई पकड़े आपको अच्छा लगता है? यार तेरे समझ आ रहा है भी तू छੱਡ तो जान दे। अंकल जी मैं अपने घर जा यार। क्यों जाएगा अपने घर ये? जब ऐसे ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਤਵਾਲੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਇਆ ਤੱਕ। ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ। तो ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਲ ਪੱਟੇਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਪਿਆਰ से कोई ना ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜੋ ਬਾਲ ਨਾ ਪੱਟ। ਕੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਕਰਕੇ ਐ ਕਰ ਲੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਰ ਲੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾ ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਗੜ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਾਗੜਦਾ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਗੜਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਮੰਨੋਗੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚੇ ਆ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਓਏ ਜੀ ਹਟਦੇ ਬਾਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ। Now it's time to reveal our cameras and explain that this is just a real life experiment. ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਰਨਾ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਟਕ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਬਾਬਿਓ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ। ਉਹ ਜਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਤੇਰੇ ਥਾਪੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ। ਬਾਤ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੌਣ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਪੱਟਦੇ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬਾਲ ਪੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਥਾਪੜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲ ਕਾਹਦੇ ਪੱਟ ਰਹੇ ਦੱਸ। अच्छा नहीं लगता जी, साडे भी बच्चे हैं छोटे छोटे हैं जी, क्यों मारिए? कोई अपना इंसान कोई भी इंसान हो जो बच्चों को मारेगा तो उसको बर्दाश्त कैसे करेगा? कैसे करेगा बर्दाश्त? हमारे पंजाब में तो खास बात ये है भी किसी को जुल्म नहीं होने देंगे हम। So it seems it's not just big cities. Even if you're a rediwala in a Sunday bazaar in small town India, you can't get away with child labor and being rough on kids. Now, since our survey showed that North India has a higher level of child labor, we did one more real life experiment, this time in Chandigarh. जल्दी कर सामान चेक सारा। सुनिया नहीं तू? तेरे नाल गल करी ना मैं। Our actor here is one of the bosses at the restaurant, and this little fellow is our child actor. चक तेन सुनी नहीं आंदा यार भाजी? फिर भी भाजी बच्चा तो गल हो नहीं कि भाई जी पैसे दे के काम करा रहे हैं, कोई आप फ्री तक करा नहीं रहे भाई। अज चकेगा तो ही कल नूं चकना सिखूगा यार। होर हुणे नाल ही प्रैक्टिस भाई। एक गल सुन, मेरी गल सुन, साडा बंदा है, सानू काम करना ठीक है, साडा बंदा है यार। गुस्से क्यों भाई यार? काम करदा वे। एक गल दसो, जे ऑर्डर लेट हो जाए तुसीं कहंदे हो भी ऑर्डर लेट है, तुसीं नहीं कहा, पर तुहाडे तरह होर कस्टमर आंदे हो तां कहंदे आ एज दी गल नहीं भाई जी। इत्थे पैसे देने आ, पैसे भी तो दे रहे हैं। गड्डी चक्कर ने पैसे दिंदा कोई? मेरी गल सुन भाई, एक मिनट मेरी गल सुन, तरीके दी गल नहीं की। तो बच्चे दे की हो गया? पैसे दे रहे हैं यार, हद है यार। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ। भाई मेरी एक मिनट मेरी गल सुन ला राम। पैसे दे रहे हैं भाई ओ मेरे वास्ते काम कर रहा है, 500 ਚੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ओ मेरे वास्ते काम कर रहा है ਵੀਰੇ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ। ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕ
क्यों चक्का ए कुर्सियां चक क्यों चक्का कुर्सियां चक क्यों चक्का कुर्सियां चक क्यों चक्का की हुंदा भाई मैं क्यों चक्का मेरा बंदा मैं काम करावा मेरी गल सुन एक मिनट भाई मेरी गल सुन मैं पैसे दे के काम करा रहा हूं चाहे मैं प्यार ना करावा चाहे मैं गुस्से नाल करावा उम्र तो फिर की हो गया भाई मेरी गल सुन मैं मेरा बंदा है मैं चाहे So it's reveal camera time before things get too violent. मैं आपदा काम करा रहा So this is actually a TV show. We're doing a situation against child labor. There are actors. वो बहुत मासूम लग रहा था बच्चा, ऐसे लग रहा है इसको ठंड लग रही है, निक्कर में है, हमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इसके पास कपड़े भी नहीं है और इसका फेस देखिए। जब हम यहाँ पर आए तभी इस चीज़ को नोटिस किया था कि होते ही बिकॉज लगा तो एंटर होते ही हमने देखा था, बट फिर बढ़ता रहा, एंड में लगा कि ज़्यादा गलत है तो हमने फिर बोला। मेरा दिल था कि एक्चुअली उठ के उसको चांडे लगा दूँ, अम्मी सर होता तो चांडे लग गए होते अभी तक, बट चंडीगढ़ थोड़ा आउट ऑफ सिटी कारण मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा था, सर को कह रहे थे आप करो। मैं तब से देख रहा हूँ मेरा खाना ठंडा हो गया रात की, मैंने खुद अपने नैपकिन पे नंबर लिख के रखा कि अब अगर इस बच्चे को इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे मंडे को फ़ोन कर लेगा, तो उसके लिए स्टडी वगैरह सब कुछ वहाँ पर अमृतसर में कर लेंगे। रात इतने गलत सिचुएशन में रखना। Serious stuff there. So all our experiments on child labor point to one thing. The level of awareness in India is much higher today. In fact, in the last 15 years, child labor is reported to have dropped by 50%. That's reported, of course. But it's still high, but it is coming down. One reason is because the ordinary Indian is more aware and is getting involved. The other reason is, of course, the excellent organizations that are fighting to end child labor, like Bachpan Bachao Andolan, Care India, Talash, Global March, and Pratham. Their work is having a significant impact. And of course, there is the man who has made us all proud by winning the Nobel Prize this year, Kailash Satyarthi, who's been fighting and fighting for 25 years on just this issue, put an end to child labor. Well, that's it for this week. Thanks for being with us. I just have to leave you with one thing the woman interventionist in Delhi said that struck a chord with me. I hope it makes you think too. Thanks for being with us. Bye-bye. If you are doing wrong and if you are saying wrong, it's the same thing. At least for me, अगर आप गलत कर रहे हैं और आप गलत देख रहे हैं और उसको सह रहे हैं तो दोनों चीज़ें एक बराबर हैं.